गुड इवनिंग एवरीवन। जैनों की पाठशाला यूट्यूब चैनल में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जनरल वेटनरी पैथोलॉजी जो यूनिट 1 के अंदर कवर होता है और जो पेपर 1 के अंदर कंसीडर होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी काफ़ी कोई पॉइंट कवर किए थे, जैसे यूनिट 4 और 5, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पेपर 1 में वो यूनिट 1 है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि सर इसका सॉल्यूशन वगैरह और यूनिट 1, 2, 3 कब रखोगे, तो मैंने अब यूनिट 1 रखा है और यूनिट 2 और 3 बहुत जल्दी रखूँगा। और आपके स्टूडेंट के बीच में मेरे वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यूनिट 1 के अंदर सबसे पहले जैसे हम पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 में सब्जेक्टिव रखते हैं, ऐसे ही पैटर्न सेम है यहाँ पे। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें गिव द स्पेसिफिक वर्ड और द टर्मिनोलॉजी फॉर द फॉलोइंग। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टिफनिंग ऑफ द जॉइंट्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल आफ्टर डेथ, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम राइगर मोर्टिस बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है सेल्स ऑब्जर्व इन एलर्जिक इन्फ्लामेशन, दैट इज द ईओसिनोफिल्स। थर्ड क्वेश्चन है जनरलाइज एडिमा ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू, उसको हम एनासार का बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इंजरी और द डेथ कॉज्ड बाय द हाई टेंशन इलेक्ट्रिक वायर, उसको हम इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। लेकिन जब बिजली गिरती है और जब वहाँ पे एनिमल का डेथ होता है उसको हम लाइटनिंग स्ट्रोक बोलते हैं। फिफ्थ नंबर है कि फोकल एमाइलोडिसिस ऑफ द स्प्लीन दैट इज नॉन एज सेगो स्प्लीन। जब डिफ्यूज होता है एमाइलोडिसिस तो उसको हम बोलते हैं बेकन स्प्लीन, लेकिन जब फोकल होता है तो उसको हम बोलते हैं सेगो स्प्लीन। उसके बाद है छठा क्वेश्चन एस्केप ऑफ इरिथ्रोसाइट फ्रॉम द इनटेक ब्लड वेसल, तो उसको हम डायापेडेसिस बोलते हैं। जबकि रप्चर होता है जब ब्लड वेसल का और वहाँ से जब सेल रेड ब्लड सेल रिलीज होते हैं तो उसको हम रेक्सिस बोलते हैं। रप्चर मीन्स रेक्सिस। ब्लीडिंग 7 नंबर क्वेश्चन है यूजुअल शेप ऑफ द इन्फ्राक्ट ऑफ द किडनी, दैट इज जनरली वेट शेप होता है। जो इन्फ्राक्ट का शेप होता है ना, दैट इज द वेट शेप, WEDGE, वेट शेप। 8 नंबर है ब्लीडिंग फ्रॉम द नेजल कैविटी, दैट इज नॉन एज एपिस्टेसिस। 9th क्वेश्चन है डिपोजिशन ऑफ द कोल्ड पार्टिकल इन द लंग, दैट इज नॉन एज एंथ्राकोसिस। 10 नंबर क्वेश्चन है कि डाइजेशन ऑफ द टिश्यू बाय देयर ओन सेल्यूलर एंजाइम, दैट इज नॉन एज ऑटोलाइसिस। 11 नंबर क्वेश्चन है एनलार्जमेंट ऑफ द टिश्यू और एन ऑर्गन ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ इंडिविजुअल सेल, दैट इज द हाइपरट्रोफी। Circumscribed cavity containing the pus in the epidermis, that is known as abscess. Important pyrogen producing inflammatory cell, that is the neutrophil. 14 number जो important question है carbohydrate that can seen under the microscope, that is the glycogen. Type of the degeneration due to the failure of the sodium pump mechanism, that is the hydropic degeneration. 16 number inflammatory cells called second line of the defense, that is the macrophages. 17 number question है progressive development of the disease process right from its initiation to its recovery or the death, that is known as pathogenesis. 18 number question है accumulation of the blood into the lower part of the dead animal due to the gravity, that is the hypostatic congestion. Reduction in the effective circulatory blood volume and the blood pressure, that is known as hypovolemic shock. 20 number area of the coagulative necrosis due to the blockage of the end artery which has a minimal collateral circulation, that is known as infraction. Local or the focal loss of melanin in an individual, that is known as leukoderma. See here 3 terminology: albinism, leukoderma or the vitiligo. Albinism, that means the complete absence of the melanin pigment. Vitiligo, that means particular complete or the partial loss of the melanocytes, not a melanin, that is known as vitiligo. Perivascular lymphocytic infiltration, that is known as perivascular coughing. 23 number deposition of the calcium in the dead or the dying tissue, that is the known as dystrophic calcification. Immigration of the leukocyte toward the site of the injury along the chemical gradient, that is known as chemotaxis. 25 number disorder of the uric acid metabolism resulting into the deposition of the urate crystal into the tissue, that is known as gout.
26 number, tract in the tissue communicating with the epithelial surface, discharging the pus from the abscess that is known as sinus. The hemocydin-laden macrophages in the alveolar spaces that is known as heart failure cell, a functional counterpart of the neutrophil into the rabbit and domestic fowl that is known as heterophil. Last question, morphological changes that is follow the cell death in the living tissue or the organ that is known as necrosis. तो यहाँ पे हमने वन वर्ड देखा है. अब हम आगे नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक फॉर द फॉलोइंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं. First question in the inflammation, the process of the accumulation of the leukocyte at the periphery of the blood vessel is called margination. Programmed cell death is called as apoptosis. Third question, reversion of the cell into its embryonic stage and the lack of the differentiation of the neoplastic cell, it is termed as anaplasia. Accumulation of the clear fluid into the thoracic cavity that is known as hydrothorax. अगर वहाँ पे accumulation of the blood into the thoracic cavity है, that is hemothorax. Remember it is. Swelling of the cell with a granular cytoplasm is microscopically seen in cloudy swelling. A death of the adipose tissue in the living individual is known as fat necrosis. Shrinkage in the size of the cell that have attained the full maturity is called atrophy. Specific staining method used for the demonstration of the calcium, that is the 1-cosa stain, and the lysosomal storage disease, lipid metabolite, usually fill in the blank and fill in the blank are accumulates into the cells, that is the glycolipids and the phospholipids are accumulates into the cell. Thrombi present at the bifurcation of the blood vessel, that is termed as saddle thrombi. Excessive formation of the granulation tissue is called as proud flash. Process of the engulfing and the digestion of the bacteria by the neutrophil, it is called as phagocytosis. 13 number, fusion of the macrophage to form the large multinucleated phagocyte cell that is known as giant cell. 14 number, type of the calcification related to the blood calcium level, that is the metastatic calcification. वहाँ पे blood level में change होता है, जबकि dystrophic calcification में blood level में कोई changes होते नहीं हैं. Plasma cells are derived from the B lymphocytes. Khaljigia type of the gangrene present into the internal organ, that is the most gangrene which are the centrally present into the internal organ like the intestine and all like. Chronic venous congestion cause the condition into the lung, that is the brown induration. Brown induration produce करता है in lung के अंदर. 18 number, fill in the blank is antibody producing cell, that is the plasma cell. Modified macrophage into the granulomatous type of the inflammation, that is known as epithelioid cell. Deposition of the iron in the lung tissue, that is known as siderosis. An increased amount of the melanin within the skin, that is known as acanthosis nigricans. Last question, the excessive accumulation of the fat into the body, that is known as obesity. अब हम चर्चा करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक और वन वर्ड के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव पार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आफ्टर द डेथ इज कॉल्ड एज पोस्टमार्टम क्लॉट. Complete absence of the melanin pigment and individual, that is termed as albinism. B. Thrombosis added to the wall of the heart, that is termed as the mural thrombi. Vandenberg reaction in toxic jaundice, that is the biphasic. जबकि प्री हिमोलाइटिक, जिसको प्री हिपेटिक और हिमोलाइटिक होता है, वहाँ पे इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्टिव होता है वहाँ पे वांडर डायरेक्ट रिएक्शन होता है. यू रिमेंबर दिस थ्री, वांडर रिएक्शन फॉर द टॉक्सिक, प्री हिपेटिक और द हिपेटिक. Fifth number, blood circulation was the first discovered by William Harvey. Myxoma is the classical example of the mucoid degeneration. Don't remember here, it is not a mucus, but it is a mucoid degeneration. Chicken flat clot is normally seen in buffalo. 8 number question, the type of the inflammation seen in tuberculosis, that is the granulomatous type of the inflammation. Epistaxis means the bleeding from the nose. Accumulation of the fluid into the tunica vaginalis is termed as hydrocele. White muscle disease, an example of hyaline degeneration. The process by which leukocytes come out from the blood vessel in the extracellular space is termed as emigration.
Immigration. Answer B. A functional enlargement of the 13 number, enlargement of the tissue or the organ due to the increase in the size of the individual functional cell, that is known as hypertrophy. 15 number question, lack of the differentiation of the neoplastic cell through an inadequate maturation, that is known as anaplasia. Hydrophic degeneration is closely related to the cloudy swelling. Answer is B. Modified macrophage in a granulomatosis type of the inflammation known as, answer D, epithelioid cell. Histamine, 18 number, histamine is released from mast cell. Answer is B. Blister are formed in the case of which type of the inflammation, that is the serous inflammation. 20 number, the mediators responsible for the vasodilation immediately after the injury, that is the histamine. 21 number, the correct sequence of the cellular event in inflammation, answer is D, margination, adhesion, immigration, chemotaxis and the phagocytosis. 22 number, infraction in brain. remember infraction in brain usually cause liquefactive necrosis, क्योंकि brain के अंदर most common necrosis है liquefactive necrosis होता है. 23 number, enzyme present into the animal which prevent the occurrence of the gout, that is the uricase. 24 number, alteration in the size, shape and the orientation of the adult cell. Adult cell, remember here, that is known as dysplasia. Condensation of the chromatin leading to the small round nucleus, that is known as, answer is A, pycnosis. (26 number, the basic pathological change in the pox, that is the hydrophic degeneration. Answer is B. So 27 number, remember infract is an area of which type of the necrosis. जनरली इंफ्रैक्ट एरिया जो होता है उसमें कोएगुलेटिव टाइप ऑफ नेक्रोसिस होता है, लेकिन जब ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर इंफ्रैक्ट पूछे तो वहाँ पे लिक्विफेक्टिव आंसर लगाना है. 28 number, type 1 hypersensitivity reaction is mediated by IgE. Answer is C. Thrombi in which blood channels have been formed through the clot, that is known as canalized thrombi. Pseudomembrane formation occur in, answer is D, fibrinous inflammation. Calcification in arteriosclerosis in cattle is due to the dystrophic calcification. Answer is A. Conversion of the one type of the epithelial into the another type on the same germ layer, that is known as metaplasia, not a metastasis. Remember, it is a metaplasia. हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को कवर किया. अब इसके बाद हम जो स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने कवर किया है. तो सबसे पहला है द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज सीन इन द बोथ डिफेंसिव एंड द रिपेरेटिव इन नेचर. ट्रू. Suppurative inflammation is characterized by the presence of the lymphocyte. False. Generally, it is characterized by the presence of the neutrophil. Catheteral inflammation is seen in the mucous membrane. C. It is true because of catheteral inflammation generally कहाँ जहाँ mucus ज़्यादा होता है, like intestine वहाँ पे होता है. कैथेरल इन्फ्लामेशन जोन्स डिजीज के अंदर होता है. 4th नंबर, टिश्यू फॉर द हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन आर प्रिजर्व इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मेलिन. फॉल्स. एक्चुअली 10% फॉर्मेलिन के अंदर हम प्रिजर्व करते हैं. फेल्यूर ऑफ ऑर्गन टू डेवलप बिफोर इट रीच टू द नॉर्मल साइज इज नोन एज हाइपोप्लासिया. ट्रू. प्रोटीन कंटेंट ऑफ द एक्सुडेट इज वेरी हाई. दैट इज ट्रू. In viral infection, 7 number, of the brain, viral infection of the brain, the lymphocytes are infiltrated into the perivascular space. True. 8 number, faulty reaching of the medicine in cow may produce the digangrene of the lung. False. It generally produces the moist gangrene. Chronic inflammation is characterized by the marked proliferation of the connective tissue. True. 10 number, emboli originated from the arterial thrombi gets lodged into the general circulation. True. 11 number, fat emboli is common after the automobile accidents. True. Cooling of the body after the death is termed as rigor mortis. False. जब बॉडी कूलिंग होता है आफ्टर डेथ उसको हम अल्गर मोर्टिस बोलते हैं. 13 नंबर, इन एमाइलोसिस एमाइलोइड मटेरियल इज डिपोजिटेड इन द सेल साइटोप्लाज्म. फॉल्स. इट इज नॉट नेवर इन टू द सेल साइटोप्लाज्म. 14 नंबर, invasion and the putrefaction of the necrotic tissue by the saprophytic bacteria is known as autolysis. False. It is known as gangrene.
15 number question. The process of the leukocyte moving outside the blood vessel is known as margination. False. It is known as immigration. So 15 number false. Pinpoint hemorrhage are known as ecmotic hemorrhage. False. It is known as petechial hemorrhage. Microscopic lesion are the already produced before the appearance of the gross lesion. True. True. Metrorrhagia is bleeding from the uterus. True. Healing of the neuron or the nerve cell occur by the substitution. False. Because of generally healing of the neuron is very limited, but if it occur, then it is by the regeneration process. The substitution, that is the false. 19 number false. Pass is used for the demonstration of the fat into the tissue section. False. Pass जो glycogen को demonstration के लिए use करते हैं. Brisket edema usually occur in animals grazed at high altitude. True. हायर एटीट्यूड पे जनरली ब्रिस्केट एडिमा होता है. 22 नंबर फॉरेन बॉडी सर्कुलेटिंग इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज एम्बोलस. ट्रू. 23 number question. A lesion which is specific for the specific disease is known as a pathognomic lesion. True. Like the corrugation of the intestine, that are specific for the Jones disease. So pathognomic lesion are the always specific for the disease, like in swine fever, button ulcer, turkey egg kidney. Likewise in Ranicate disease, the petechial hemorrhage on the proventriculus and the button ulcer, hemorrhagic button ulcer into the intestine or the cecal tonsil. These all are the pathognomic lesion. 24 number eosinophilia is seen in acute bacterial infection. False. Generally eosinophilia parasitic infection में मिलता है. Silicosis is due to the deposition of the silica particle into the lung tissue. That is the true. Gas gangrene is caused by the Clostridium organism. True. True. Heart failure cell are the seen in lung. True. Because heart failure cell heart नाम है, लेकिन वो पाए जाते हैं लंग में, हार्ट में नहीं आता है. कंफ्यूज मत होना. That is means heart failure cell seen in lung. That is known as true. Spread of the gangrene is slow in moist gangrene. False. Actually जो spread moist gangrene में होता है वो fast होता है, जबकि dry gangrene होता है तो वहाँ पे उसका spread slow होता है. Redness in the inflammation is due to the lysis of the red blood cell. False. वहाँ पे redness inflammation में कोई भी red blood cell की lysis की वजह से नहीं होता है. 30 number liquefactive necrosis is seen in the brain tissue. True. Excess accumulation of the fat in the fat depots is termed as fatty changes. False. It is not known as a fatty changes. 34 number chronic venous congestion due to the left sided cardiac failure leads to the cardiac cirrhosis. False. Actually generally right sided heart failure होता है तब जाके वहाँ पे cardiac cirrhosis होता है. तो 32 number false. Tuberculosis is classical example of the caseative necrosis. True. Emboli, last question. Emboli originated from the arterial thrombi gets lodged into the general circulation. True. हाँ, यहाँ पे हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव देखा. अब हम जो इम्पोर्टेंट मेथ द फॉलोइंग है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. तो सबसे पहले है फर्स्ट है फादर ऑफ द मॉडर्न पैथोलॉजी, दैट इज द रुडोल्फ विर्चो. फादर ऑफ द मेडिसिन, दैट इज द हिपोक्रेट्स. फादर ऑफ एनाटॉमी, दैट इज क्लाउडियस गेलन. फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन, दैट इज रेनेटस वेजिटस. फादर ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, दैट इज द एंटोनो बेनिवेनी. Father of the histology, that is Xavier Bichet. Father of immunology, that is known as Edward Jenner. The seat and the cause of the disease किसने दिया था, किसने लिखा था, that is the J.B. Morgany. The germ theory of the disease, that is given by the Louis Pasteur. Supreme descriptive pathology, that is the Carl Rocky Tansey. उसके बाद है कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ मिलती है. एमाइलोडोसिस, तो वहाँ पे ग्रीन ब्रिम्फिंजेंस, एमाइलोड होता है और ग्रीन ब्रिम्फिंजेंस कलर प्रोड्यूस करता है. कॉर्पोरा एमाइलिका, दैट मीन्स एपिथेलियल हाइली डिजनरेशन. प्लाज्मा सेल, दैट फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ब्राउन इंड्यूरेशन, फॉर दैट इज फॉर जनरली क्रॉनिक वेनस कंजेशन में ब्राउन इंड्यूरेशन होता है. 4 में बी. न्यूट्रोफिल, दैट इज फॉर एक्यूट इन्फ्लामेशन. Giant cell, that is for granulomatous type of the inflammation. 7 number IgE, that is for immediate type of the hypersensitivity. Pox disease, that is for hydropic degeneration E. Equine azoturia, that is particular for the muscle hyaline degeneration, means answer 9F. Moist gangrene,
दैट इज आई हैव टोल्ड ना इंटरनल ऑर्गन, मोस्ट गैंग्रीन जनरली कहाँ इंटरनल ऑर्गन में होता है, तो वहाँ पे आंसर इज इंटोससेप्शन, मीन्स इंटेस्टाइन में जो इंटोससेप्शन होता है वहाँ पे मोस्ट गैंग्रीन बनता है। उसके बाद है रिएक्शन और टाइप, सामने टाइप भी है और यहाँ पे जो कंडीशन है, एनाफाइलेक्सिस दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सीरम सिकनेस दैट इज द सिस्टेमिक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन दैट इज द लोकल टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न दैट इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और उसके बाद है सेल मीडिएटेड टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, आंसर 5th का बी। उसके बाद है रिमोटेड फैक्टर दैट इज द ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट IgG। उसके बाद है SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, हाँ दैट इज द 7 नंबर, दैट इज मीन्स आंसर इज J एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी ANA। 8 नंबर एली सेल दैट इज फॉर F, answer is F, neutrophil that have phagocyte nuclei from the dead cell, pemphigus that is means answer is H, autoantibody against intercellular cement. 10 number myasthenia gravis that is for autoantibody against acetylcholine receptor. उसके बाद है पेस्टियल स्टेन दिया है, काफ़ी बार पूछते हैं यहाँ पे कौन सा पेस्टियल स्टेन कौन से एलिमेंट के लिए यूज होता है उसके बारे में। सबसे पहले है मेजन ट्राइकोम दैट इज फॉर कोलाजन फाइबर, वान कोसा स्टेन दैट इज फॉर कैल्शियम, पल्स पर्शियन ब्लू स्टेन दैट इज फॉर हेमोसिड्रिन, कॉन्गो रेड दैट इज फॉर एमाइलॉइड, बेस्ट कार्मिन दैट इज फॉर ग्लाइकोजन, सुदान 4 दैट इज फॉर द फैट, और फैट के लिए ओस्मिक एसिड भी है और सुदान 4 भी है, ग्रिडली दैट इज फॉर जनरली फंगस, जेलनेंसन स्टेन दैट इज फॉर माइकोबैक्टीरियम एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म, डी खेलेंथा दैट इज फॉर यूरिक एसिड, और म्यूसिकार्मिन दैट इज फॉर आंसर इज जी म्यूसिन। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गन दिया है और ऑर्गन के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल होता है उस ऑर्गन का उसके बारे में हमें मैच करना है। तो लीवर है तो उसके अंदर फेगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर क्या बोलते हैं, कुफर सेल। ऐसे टिश्यू के अंदर क्या होता है तो वहाँ पे होता है हिस्टियोसाइट होते हैं। लंग के अंदर क्या होता है तो वहाँ पे एल्वियोलर मैक्रोफेज और डस्ट सेल होते हैं। स्प्लीन और लिम्फ नोड साइनस हिस्टियोसाइट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइक्रोग्लिया आर द फेगोसाइटिक सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोन है कि बोन का फेगोसाइटिक सेल ऑस्टियोक्लास्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स का है साइनोसोइडल सेल। एड्रिनल कॉर्टेक्स का है साइनोसोइडल सेल। गेमिस्टोसाइट दैट इज फॉर रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट है। गेमिस्टोसाइट क्या है वो रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट है, वो फेगोसाइटिक सेल नहीं है, सिर्फ वो रिएक्टिव। गेमिस्टोसाइट को क्या बोलते हैं वो है रिएक्टिव एस्ट्रोसाइट बोलते हैं। लेंगरहांस टाइप ऑफ द जाइंट सेल दैट लेंगरहांस सेल, लेंगरहांस टाइप ऑफ जाइंट सेल नहीं बात कर रहे हैं, लेंगरहांस टाइप ऑफ द जाइंट सेल विच आर द प्रेजेंट इन ट्यूबरकुलोसिस। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेंगरहांस सेल के बारे में बात करते हैं, वो है आंसर एफ डेंड्राइटिक सेल ऑफ द स्किन। और लास्ट है हेजल्स कॉर्पस्कल दैट इज प्रेजेंट इन टू द थाइमस। उसके बाद है सबसे पहले मोइस्ट गैंग्रीन दैट इज फॉर इंटुससेप्शन। वान कोसा दैट इज फॉर कैल्शियम। ड्राई गैंग्रीन दैट इज फॉर द एक्सट्रीमिटीज, दैट इज फॉर extremities, answer is B. Prostaglandin that is the chemical mediator of the inflammation, answer is H. Major basic protein, answer is eosinophil. I. Delayed type of the hypersensitivity reaction that is tuberculin reaction. A. Immediate type of the hypersensitivity that is for anaphylaxis. Fat necrosis that is for pancreatic lipase. Lung that is for the particular heart failure cell. Brain that is liquefactive necrosis. Tuberculosis that is the causative necrosis. अब देखो दोस्तों ए वाला जो मैच द फॉलोइंग है इसका आप आंसर कमेंट में मुझे बताना, और 48 आवर के बाद मैं इसका आंसर रखूँगा सही वाले क्या है। तो जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं उसके मेरी रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए मैच फॉलोइंग करके। हाँ, उसके बाद अगले हम देखते हैं कि जनरली जो एक्सुडेट है दैट इज़ द पर्टिकुलरली प्रेजेंट इनटू द
जो इन्फ्लामेशन की प्रोडक्ट होती है उसमें है, मीन्स आंसर इज ए। फीवर है, मीन्स आंसर के, सिस्टमिक साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन। इमीडिएट टाइप ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज द एनाफाइलेक्सिस। फैट नेक्रोसिस, that is the pancreatic lipase. Moist gangrene, that is particular intussusception. Dry gangrene, that is again into the extremities. Sir Percival Pott, that is सर पेर्सिवल पोर्ट ने क्या ढूंढा था उसके बारे में हमें बताना है, तो उसने केमिकल कार्सिनोजन की खोज की थी। प्रोस्टाग्लैंडिन, दैट इज द केमिकल इमीडिएटर ऑफ द इन्फ्लामेशन। ऑयल रेड ओ, ऑयल रेड ओ एक किसके बारे में, कौन सा स्टेन है, उसके लिए कौन सा स्टेन है, तो ऑयल रेड ओ है, फेट का स्टेन करता है। कोरिनोस सेल्सस, तो ये क्या है कोरिनोस सेल्सस, तो जनरली वो कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन इसने दिए थे। उसके बाद है रिमोटेड आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज। आपका जो डिजीज़ है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है, फिर हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जो इम्यूनिटी करके डिजीज़ है उसके बारे में दिया है। और किसी को इसका लिटरेचर चाहिए अगर इम्यूनिटी ऑफ द डिजीज़, जो मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट बनाया है, तो कमेंट में आप बताएंगे या आप कमेंट में अपना ईमेल लिख दीजिएगा, मैं आपको ईमेल सेंड कर दूँगा। उसके बाद है लास्ट कॉन्गो रेड स्टेन, दैट इज़ फॉर पर्टिकुलर अमाइलॉइड। तो यहाँ तक हमने बात की है मेड द फॉलोइंग की। अब हम बात करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले राइगर मोर्टिस, सेकंड है सेगोस्प्लिन, थर्ड है एपिस्टैक्सिस, फोर्थ है डायापेडेसिस, फिफ्थ है एंथ्राकोसिस, सिक्स एनासार्का, ओटोलाइसिस, इलेक्ट्रोक्यूशन, जनरल पैथोलॉजी, बायोप्सी, लीजन। 12 है प्राउड फ्लेक्स, उसके बाद है 14 है फॉर्म सेल, 15 है एम्बोलिज्म, 16 है फीवर, फिर फ्री रेडिकल्स, हाइपर सेंसिटिविटी, ऑटोइम्यून डिजीज, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, एपोप्टोसिस एंड द डिजीज। तो काफ़ी बंदे की रिक्वेस्ट थी कि डिफाइन और द लॉन्ग क्वेश्चन और डिफरेंस का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं। तो जैसे ही मैं यूनिट वाइज जो अपना लेक्चर ख़त्म करूंगा उसके बाद जो डेफिनेशन है और डिफरेंस है उसका मैं आपको एक सभी यूनिट का एक कंबाइंड में एक लेक्चर यहाँ पे ऑनलाइन शेड्यूल करूँगा। उसके बाद है पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव पार्ट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर द कैरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें है डिफाइन द हीलिंग, व्हाट इज द हीलिंग बाय द रीजनरेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑन द हीलिंग बाय द सेकंड इंटेंशन। Second question है define the inflammation, analyze the cardinal sign of the inflammation, give brief amount on the sequential changes of the vascular event of the acute inflammation. Third है analyze the various exogenous and the endogenous pigment, describe in the brief about the etiology and the pathogenesis of the hemolytic jaundice. Fourth है describe in the brief about the chronic venous congestion on the account of the right and the left sided cardiac failure. उसके बाद है शॉर्ट नोट, जिसमें काफ़ी सारे शॉर्ट नोट जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे रखी है और हर बार यही पूछी जाती है। फर्स्ट है गाउट, सेकंड है सेलुलर स्वेलिंग, थर्ड है रिवर्सिबल हाइपोक्सिक इंजरी, फोर्थ है नेक्रोसिस, फिफ्थ है गैंग्रीन, सिक्स है इडीमा, सेवन है शॉक, एट है क्लासिफिकेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन बेस्ड ऑन द एक्सुडेट। मीन्स अगर ब्लड है दैट इज द हेमरेजिक इन्फ्लामेशन, अगर कोई फ्लूइड है दैट इज द सीरस इन्फ्लामेशन, लाइकवाइज यू हैव टू क्लासिफाई बेस्ड ऑन द एक्सुडेट्स। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, एप्रोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन वर्सेस मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, ट्रांसयूडेट वर्सेस एक्सुडेट, थ्रोम्बस वर्सेस पोस्टमार्टम क्लॉट, प्री हेपेटिक वर्सेस पोस्ट हेपेटिक वर्सेस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जो 1 से 5 है वो जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछे जाते हैं। जो 6, 7, 8, 9 है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आपको आने चाहिए। कभी बार जब पेपर टेढ़ा निकलना है तब इसको रखे जाते हैं। 6 नंबर है करंट जेली क्लॉट वर्सेस चिकन फ्लेट क्लॉट, और 7 है ड्राई गैंग्रीन वर्सेस मोस्ट गैंग्रीन, 8 है एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, 9 है म्यूकस डिजनरेशन वर्सेस म्यूकोइड डिजनरेशन। So hope you people have enjoyed this video and thank you for the watching. I again request you all people to like, share and subscribe among your student. If anybody having any query, you just comment it and we'll meet in the next video regarding the unit 2, 3 and the 6. And very shortly I am posting this unit 2 and 3 video before your annual board exam. Thank you very much.